आपको बताएं कि पाकिस्तानियों में वैसे ये बात हमें पता है कि टैलेंट और पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, ये दुनिया भी देख चुकी है और मानती भी है। जो कमी है वो है मौक़ों की, वो है एक्सपोजर की। और यही देखते हुए उम्मीद फाउंडेशन अमेरिका की मशहूर MIT यूनिवर्सिटी है, उसके इश्तराक से आइडिया लैब प्रोजेक्ट पाकिस्तान लेकर आ रही है। और इस प्रोग्राम का हदफ ये है कि नौजवानों को बिजनेस और लीडरशिप की नई अप्रोच समझाना, उन्हें मार्केट की आगाही देना और पाकिस्तानी के लिए अमेरिका में क्या स्टार्टअप्स के मौके हैं उनसे भी आगाह करना। और इस काम के लिए उम्मीद फाउंडेशन के साथ अमेरिका का मार्टिन ट्रस्ट सेंटर भी होगा। और ये ट्रेनिंग कैंप्स और कोर्सेज करवाने के लिए लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज यानी लम्स का इंतखाब किया गया है। अब ये क्या ट्रेनिंग होगी, क्या नहीं होगी, इसके लिए हमें दो मेहमानों ने ज्वाइन किया है। हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ज़ेर तालीम हैं MIT में अमेरिका में, और डैनियल डाट ने हमें ज्वाइन किया है, ये भी MIT से मुंसलिक हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। हसन, आपसे बात का आगाज करते हैं और फर्स्ट वी वुड लाइक टू नो अबाउट दिस उम्मीद फाउंडेशन एंड व्हाट आर योर प्लान्स विद MIT। हसन उर्दू बोल सकते हैं, हाँ, लेकिन साथ वो बैठे हुए हैं ना, सो दैट डैनियल कैन आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट हसन इज सेइंग। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। उम्मीद बेसिकली एक इनिशिएटिव है जिसमें हम पाकिस्तानी यूथ को उम्मीद देना चाहते हैं टू स्टैंड ऑन देयर फुट और अपने आप पे भरोसा करें और दे हैव टू बी पार्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम। पाकिस्तान में 31% जो एजुकेटेड यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है। And then if we talk about the population of Pakistan, 240 million people, 60% of that is at the age of below 30. तो हमारा जो population है वो young है और educated है। So from that perspective we have a huge potential जिसमें हम entrepreneurship के पूरे ecosystem को uplift कर सकते हैं। और हम करना ये चाह रहे हैं कि उम्मीद MIT और पाकिस्तान की जो दरसगाहें हैं उनसे कोलैबोरेट करें और हम एक फ्रेमवर्क क्रिएट करें जिसमें एक सस्टेनेबल और इक्विटेबल मॉडल पाकिस्तान को प्रेजेंट किया जाए जो कि पूरे सिस्टम को अपलिफ्ट करे और एक उम्मीद की किरण की तरफ हमारे सामने। Daniel, how did you get on board? Obviously, before jumping into something, you must have done your research. Did you study our success stories, or was it just somebody coming to you and approaching you? Thought, all right, let's do this. Pakistan has a lot of potential. What was your research behind it? Yeah, so I've worked for about 6 years across the Middle East and Africa, and then before going to MIT and becoming a venture capitalist, I think when you're trying to invest in new companies, you're always looking for the most underinvested opportunity with the most talent. And I agree with Hassan. I think Pakistan, some people say it's a sleeping giant. I actually think it's a rising giant. I think over the next 10 to 20 years, there's an immense amount of just youth talent here, and I want to figure out a way to build a bridge between MIT and the United States and Pakistan, and hopefully get more people like Hassan, where it's like, hey, you grew up in Lahore, and how can we get you working over in the US, and how can we get the US working over here, and just figure out a way to make partnerships. And how do you plan to take forward these partnerships? Because from what we understand, there are going to be boot camps and seminars and conferences and workshops. So the idea is to equip the Pakistani youth, the ones those have promising futures or potential, to venture into some startups with MIT in the US across. Could you explain that a little bit? Yeah, the long-term vision is to really build an ongoing corridor. So there's direct communication with really quick feedback loops between MIT ecosystems and LUM ecosystems. In the long term, we'd like to expand it across all of Pakistan and just figure out a way for it to just be a direct connection so talent can go both ways. अच्छा हसन, आप हमें समझाएं, यही जो हुमा सवाल कर रही हैं, ये जो तरबियत है, ये जो ट्रेनिंग है, ये किस चीज़ का अहाता करेगी? स्टार्टअप्स, नए कारोबार, नए आइडियाज़ के लिए नौजवानों को उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ट्रेनिंग देगी? हिस्सा होंगे नौजवान, तो वो क्या लेके सीड मनी जनरेट करने में भी मदद करेगी? क्या सिर्फ लम्स के स्टूडेंट्स के लिए होगा, क्या होगा, ज़रा ये समझा दें। जी अब्दुल्ला, देखिए जो विज़न है वो ये है कि पाकिस्तान के साथ MIT की कोलैबोरेशन हो जहाँ पे हम प्रोग्राम्स डेवलप करें
एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। लम्स इज़ अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, इट्स द स्पीयर। हमारा बीच हेड मार्केट है, उसके बाद इसको हमने क्वेटा लेके जाना है, कराची लेके जाना है, पेशावर लेके जाना है, गिलगित लेके जाना है, एंड ऑन अ स्केल 3 किस्म की कैटेगरीज हैं जो हम टारगेट करेंगे। नंबर 1 फंडिंग, डैनियल डार्ट इज़ हेयर, वेंचर कैपिटलिस्ट, और उसके अलावा हम मेंटरशिप देंगे पाकिस्तानी यूथ को। नंबर 2, नंबर 3 वी आर गोना प्रोवाइड देम एक्सेस टू द लैब्स। MIT हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल व्हेन इट कम्स टू इनोवेशन लैब्स, और वो हम ओपन अप करेंगे पाकिस्तान के साथ, और इसको हम एक सस्टेनेबल साइकिल में चलाना चाहेंगे जिसमें ये सेल्फ सस्टेन प्रोसेस चलता रहे। एक इट्स नॉट अ फोटो ऑप, इट्स नॉट अ वन टाइम एफर्ट, इट इज़ गोना गो ऑन एंड ऑन। और उम्मीद इसलिए है क्योंकि पॉजिटिविटी हम देना चाहते हैं, रादर दैन जस्ट सम ग्रेजुएट looking for jobs for government sector or private sector. Yeah, but let's bring Daniel into the conversation, because we are curious to know how are you going to pick the right people or the right startups to collaborate with, to help out. How are you going to go through that process? Yes. I mean, that's a good question, and it's a process, and I don't know if we have the answer for that today. I think the first step is just get a lot of smart people in together in a room, build friendships, build relationships, and make sure that it's something that we keep coming back over and over and over, and then trying to really communicate and see what the people at LUMS need. So the people here, they're smart, they know what they need. I'm here to listen and try and facilitate those things, and then through that, build it up. अच्छा, डैनियल कह रहे हैं हसन कि he is here to listen, but obviously would there be a call for, you know, pitching the presentation? कोई आइडिया आप फ्लोट करेंगे, कोई प्रेजेंटेशन के लिए बुलाएंगे नौजवानों को? क्योंकि ये हमें लग रहा है जैसे ये पहला स्टेप होगा कि पहले तो लाइक माइंडेड लोग मिले और आइडियाज जनरेट हो, ऐसा ही है? जी, तो हुमा हम एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो मंडे से लेकर थर्सडे तक है लम्स में, लम्स एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर के अंदर है। देयर आर 7 to 8 folks from MIT visiting लाहौर, दे आर अराइविंग टुमारो। डैनियल पहले आ गए क्योंकि हमने सेटअप करना है, और उस कॉन्फ्रेंस में वी आर एक्सपेक्टिंग 120 पीपल from not only from LUMS but LUMS के मुज़ाफ़ात में भी जो they would be giving their presentation. आपने उनको सिलेक्ट किया है कि वो आएंगे? ये पहले कुछ ऐसी चीज़ हुई है? Yes, so there has been a process of selection जहाँ पे they have to be at certain level of startup, और US EFP is actually helping us, Fulbright Association, from the selection process. So they are our partners from a selection process, right? So that it's fair and transparent and equal opportunity for everyone. अच्छा, बहुत से लोगों को आज हसन पता लगा होगा इस चीज का. Can they still apply? There are many startups that I know. Or if they could approach you guys. Yes, across the country. How can they approach you? Can they still be a part of it? Yes, for sure. Daniel, go ahead. I mean, reach out to Umeed. I mean, that's the reason we're here. We're here to build a relationship. Can you please share your email or some point of contact? What's the best way through What's Umeed? the best way to get to you guys? You can search my name Hassan Abbas on at LinkedIn. All right. And yes. और वहाँ से फिर लोग आपसे राब्ता कर सकते हैं और they can contact us. Yeah. They can contact you and they can, you know, be a part of this amazing program. Thank you guys. Thank you, Daniel and Hassan. Enjoy your time in Lahore. With us. अच्छा, हम जितनी समझ आइए, ये पहला कदम है, ये अभी प्रोसेस जो है ये शुरू हुआ है, तो अभी तो आइडियाज़ जनरेट होंगे, लेकिन जो चीज़ एक हमें श्योरिटी नज़र आ रही है कि दे आर गोइंग टू गो अहेड विद इट। जब उनको लाइक माइंडेड आइडियाज़, लोग, पोटेंशियल नज़र आ रहा है, तो वो कोलैबोरेशन जो ही करना चाह रहे हैं वो होगी, जिसमें आप भी हिस्सेदार हो सकते हैं। भाई, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, अगर आप किसी भी स्टेज पे हैं, शुरू में हैं अपने जर्नी के, तो you can get in touch with Hassan Abbas. LinkedIn पे आप सर्च करें. I know I don't need to explain it. You know all these things. So आप इसका हिस्सा बन सकते हैं. बहुत सी ट्रेनिंग होगी, बहुत से क्रॉस कोऑर्डिनेशन, क्या होती है, कोलैबोरेशन, ख्याल जो हमें कोलैबोरेशन के मौके मैसर आएंगे, तबादला ख्याल हुआ, तो वो भी बहुत कुछ हो सकता है।